family business is the best school to learn about realities of life. Today, bashing family business is at peak. So much that family business people themselves have started doubting their ability. But I know them. दुनिया कुछ भी बोले, वो अपना काम करते रहते हैं. You are very optimistic about family business, and even I am very optimistic about, because I come from a family business. What are the few challenges that you see in family businesses? सर फैमिली बिजनेस को एक टैग मिला हुआ है लाला कंपनी. डू यू थिंक ये परसेप्शन गलत है, और इस परसेप्शन या इस इमेज को चेंज करना ज़रूरी है? I don't think 25 years ago any businessman ever talked about yoga or work-life balance or doing things like this. Business always is an obsession. Family business people are the first one to delegate, and their delegation is very very different than so-called corporate delegation. Just मेरे पास में आइडिया, ऐसे धंधा नहीं होता है. धंधा आइडिया से नहीं होता है, धंधा अपॉर्चुनिटी से होता है. Let the world keep talking. Ultimately, India will grow because family businesses are there, not because of any government. In spite of any government, family business will grow, and they'll continue to help the whole economy. राइट. सर आपने 3000 प्लस फैमिली बिजनेसेस के साथ काम किया है, एम आई राइट? Yeah. सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपने क्या फेस करी है जो एक फैमिली बिजनेस को ग्रो करने से रोकती है? ये जनरल सिनेरियो है. सब लोग यही बात करते हैं कि फैमिली बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है. सो ऑन दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी टॉकिंग. आपने ये नहीं बोला कि जहाँ तक पहुँचे हैं वो कौन सी ताकत है फैमिली बिजनेस की जिसके कारण ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. You have to understand, family business is the lifeline of any economy. आज टाटा मोटर्स हैं. टाटा मोटर्स के 100% suppliers will be family business. 100% distribution will be family business. Their labor contractor, their truck transporter, they are surrounding on the shoulders of the family businesses to run their businesses. So what happens is that family businesses are doing phenomenally well. They have tremendous constraint, and within that they do very well. So this is the first point. Second point is, ग्रो करने से रोकता है, ये सवाल पूछते हैं. करेक्ट. बिजनेस ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स. आज हिंदुस्तान लीवर इतनी बड़ी कंपनी है, उनको कोई नहीं पूछता है कि हर साल 50% ग्रोथ क्यों नहीं हुआ. खाली फैमिली बिजनेस के लिए सवाल पूछा जाता है कि इतना बड़ा ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, जबकि आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ फैमिली बिजनेसेस आर देयर which in last 10 years alone would have multiplied 10 times their businesses. So here is one. Where is your focus? If your focus is into what are the problems, then you will find out some of the problems. And there are standard problems people keep talking about, which I think is overhyped. Lack of professionalization, generation gap, succession planning, family governance. ये 4-5 टॉपिक के ऊपर पूरी दुनिया बात करती रहती है. बट ऑन द सेम प्रॉब्लम दे डोंट टॉक अबाउट बिग कंपनीज. रतन टाटा had succession plan. After a big search, they identified Cyrus Modi, and then it failed. Nobody talks about that as a succession planning. A.M. Nayak of L&T. Okay, years and years and years it is going. There is no handing over to one person. Nobody is talking. Everybody's agenda is only on family business. So here it is. Still, I know you want that particular Actually, answer. sir, yeah. What stops you from? Why I am saying this, because हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 70 to 80% फैमिली बिजनेसेस की ठीक है. राइट. आज पूरी हमारी जो जीडीपी पे जो फैमिली बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है. वेरी गुड. करेक्ट. तो बहुत सारी सिटीज़ है, सपोज हम कोई भी बिजनेस करते हैं, एक ग्रोथ आ जाती है बट वो स्टैगनेंट हो जाती है, वो ग्रोथ से हम बढ़ नहीं पाते. राइट. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. You are asking this question is good. Yeah. That this is applicable to every business. Everywhere, right. If I am 1, what do I do to become 10? And if I am 10, what do I do to become 100? एब्सोल्यूट राइट. राइट. But stress है ना, हर जगह पे वर्ड फैमिली पे आ जाता है, बिजनेस में नहीं आता है. This is a question of business dynamics. This is a question of opportunity. This is a question of taking the opportunity. And what is preventing now is that the new generation coming in, the previous generation, in my opinion, it was ultra dynamic. ओके. The new generation is expecting a lot, but not really pushing up that much. In general, on a large scale.
So if you will talk about two generations ago, people would talk about going to another city. Wherever my business takes, I have to go. And they will go. That's how our Marwari people went to Assam. Assam. But today it is within my comfort level. So when we talk about acquiring a company in, say, I would say Ethiopia, first question comes is, who will go there? Right. So earlier, commitment to business was high. I don't think 25 years ago, any businessman ever talked about yoga or work-life balance or doing things like this. Business always is an obsession. Obsession. And when that obsession goes down, then all the challenges become up. And one of the biggest challenge, which people of your generation like to talk, is that it is all because of family dynamics. Generation gap होता है, फादर बच्चों की बात नहीं समझते हैं, बच्चे फादर की बात नहीं समझते हैं. This is how generally people talk. Correct. So, sir, I think you are absolutely right at your point. Not necessary that you have to agree. No, no, but no, You no. asked my view, I- so I'm of telling course. my views. I feel you are absolutely right. बिल्कुल गलत नहीं है, but there are some places जहाँ पे हमारी generation भी कहीं-कहीं सही होती है. नहीं, all generation are always right from their perspective. From their perspective. What is very important is learning to appreciate another perspective. Correct. And have effective communication. I want to have a startup. I want to spend 2 crore. I ask my father, he says no. Obviously, he says no. This is his money, he is investing. So, when you approach him as any other investor, show him that if he will invest 2 crore in 3 years, it will become 20 crore. Correct. If he is convinced, he will agree. But if he is not convinced, does not agree. This is not an issue of generation gap. It is a question of perspective. And it is when each generation understand the perspective of other generation, then there is a complementation. And this complementation is the biggest strength of family business. So, आपके हिसाब से बिजनेस चलाना और बिजनेस ग्रो करना दोनों में क्या फ़र्क है? बिकॉज आई सी लाइक हम ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, काम करते हैं, बट वी डोंट नो कि हमारा आउटपुट कितना है. वी आर जानने गोइंग. की जरूरत भी नहीं है. जानने की जरूरत भी नहीं है कि आउटपुट कितना है, बिकॉज इफ यू आर बिजनेसमैन, यू आर ऑलवेज ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज. और अपॉर्चुनिटी अपने मांगने से नहीं मिलती है. अपॉर्चुनिटी जब मिलती है ना, तो पकड़ने की बात आती है. एंड एवरी फैमिली बिजनेस ऑलवेज डज इट, ऑलवेज डज इट. व्हाट इज हैपनिंग नाउ फैशनेबल टू स्टार्ट सेइंग कि आप रूटीन में पड़े रहते हो, उसके लिए आप ग्रो नहीं होते हो, इज नॉट ट्रू. If I am managing my factory, but I get an opportunity that there is a collaboration from French company, immediately I will go. Correct. It is only when there are not something to be done externally. I keep looking at internally, but does not mean that because of that I am not growing. I am not growing because of environmental factors. You talk about startup funding. We existing business does not get funding. Okay, IPO. IPO is not everybody get the money. And if we get the money, we have to make it productive use. So family businesses are far more conservative. I'll tell you, there are few differences between a typical MBA education and typical family business requirement. Okay, a typical MBA education will talk about big scale corporates, 50 crore advertising. Okay, and a manager paid 10 lakhs a month. In family business, our scales are different. So this is one gap. But most important gap is that in a corporate, manager can take a decision. Something goes wrong, he can resign and take a job next Right. day. Right. A family business, something goes wrong, hole in my pocket. Yeah. And I'll have to work hard to make it up. So obviously family businesses are far more conservative than advised by many consultants all over the world. Right. So this perspective that family businesses are different, one, they are very strong, irrespective of whatever anybody talks. Family businesses are growing, they are growing phenomenally. And if you say 80% is done by family business, then society, economy is growing because big contribution by family business. Right. Still, if you tell me about challenges, then I'll tell you some challenges. One of the biggest challenge now is that right from upbringing, somehow the formation of the next generation is abdicated. I'll tell you, 25 years ago, it was a must. धंधा ही join करना है. ठीक है?
वेकेशन में ऑफिस में आ जाओ. Now there is a question. I am going to become a pilot. I have a passion for music. I want to start something of my own, startup करना है. This is something that is ultra height. I want to do something of my own. What we mistake is every family businessman does a lot of his own, but he builds on with the support of what it was. Correct. Now, a person who talks about I want to do something of my own, does he pay his own college fees? No. Does he buy the house and stay inside? So, as it is, you are building on something that is there, but you are refusing the acknowledgement Correct. of the role of your existing foundation. I will only suggest such people 2 years. 2 years, get involved in your existing business as a training. These 2 years, don't advise anybody. You learn from everybody going on in the company. And there are a lot of practical things. Family business is the best school to learn about realities of life. Do it. You are formed. Now you do any startup, anything, your probability of success is multiplied 10 times. But how should family react? Like if someone wants to start their own startup, like they should pull, push, or like they should do partnership. First of all, startup as it is understood today, Yeah. we have mistaken Yeah. that only PC, VC funding, Yes. only technology, only talking AI, ML is called startup. हमारे दादाजी ने भी जो चालू किया था, that was also a startup, And right? every business, every time the opportunity comes, Yeah. is a question same like startup. Correct. So spirit of startup is what? Wherever I am, I want to become big. I see a gap, and when I work onto a gap, full phase I work onto it, and that is part of every business. It is for the next For the generation next to build generation it to further. build further, right. So if you take it classic case, is an example of how Aditya Birla was groomed by his grandfather, and Aditya Birla groomed Kumar Kumar Birla, Birla. and then each of the generation multiplied whatever was their benefits. Right. So ultimately, of course, new But there are generation. very limited stories like this, sir. At least we can have moral of the story. Yeah. There are actually many more stories which is not publicized. Of course. We publicize only few stories. Only few, right? And in any case, even from one exception, there can be moral of the story that elder generation is too obsessed with only routine. They need to understand that they need to put attention in grooming the next generation. And the next generation, right from very young age, in my opinion, 12 years onwards, should be attached with the family business. Today, the unfortunate part, if you ask me, the one of the biggest challenges is that gap between the younger generation as they are growing, they do not identify themselves with the business. I want to do engineering. So 8th standard onwards, I am focusing only on doing so-called studies. So if I understand आज ऑफिस में क्या हुआ तो मेरा टाइम डेविएट होता है तो मे बी आई विल गेट लेस मार्क्स सो आई डोंट वांट टू लुक व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑफिस देन आफ्टर 10th is over then 11th and 12th in the coaching classes then either engineering or BBA all along intentionally a distance is maintained with the business. On the other end, if every week they are spending 2 hours just catching up with what is happening in the business, this would have instilled understanding of the business, understanding of the life, and attachment with the business. Right. So you are saying कि जब एक बच्चा है उसको 12 या 13 या 13-14 की एज से ही ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर जाना चाहिए साथ में ताकि वो 25 to 30 के एज ग्रुप में आ सके तब तक वो उसको ऑलरेडी मालूम हो इन सब चीज़ों के बारे में. अभी ऐसा होता है कि हम कॉलेज के बाद फिर हम बिजनेस पे आते हैं, एमबीए करने के बाद फिर हम बिजनेस में आते हैं, तब तक थोड़ा मूड भी हट चुका होता है, तब तक वी थिंक डिफरेंटली. और 12 to 14 की एज ग्रुप में अगर आप अपने फादर के साथ या ग्रैंडफादर के साथ आप ऑफिस जाओगे या फैक्ट्री जाओगे, वहाँ चीज़ों को देखोगे, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट. करेक्ट? I will tell you what is change in family dynamics. Yeah. Okay? When they were kids in a joint family, they are all in the hall playing, and at the same time, father or grandfather is talking on phone with somebody. कल 2 करोड़ देना है, पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं है, and there is a tension in the mind. The kids observe that there is a tension in the mind. And after 2 days,
they also observe that people are laughing and making jokes. It means tension comes and goes. This is the insight of the family business which gets instilled in upbringing in the family. So जो बोलते हैं कि business वालों के बच्चों में business comes in the blood, is not physical blood. It is this kind of instilling. अभी वो हॉल में अगर आप नहीं हो और आप अपने कमरे में कंप्यूटर गेम खेल रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. देन यू विल ओनली थिंक के बिजनेस में प्रॉब्लम है. The change, the height of energy, problems, this dynamics was taking place very well so far in families with the joint interaction. Joint interaction. Somehow keeping yourself in another room, you are distancing from them. Why? Just because of your arrogance. अगर हमारा जमाना था, पहले का जमाना था, एक झापट पड़ेगी. वो झापट कोई मारने वाला नहीं है. तो people who don't know think that they know and they think that they are going to do in any case something different. जब आप 12 साल के थे, 13 साल के थे, you had already made up your mind you are going to do something very different. फिर 25 साल होते फिर क्यों अंदर आते हो? क्योंकि ultimately you didn't know and you wasted 10 years of your life by not remaining in touch with the business. I am not saying you have to go office every day, but क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, and feel this is your business. This particular identification from very young age is the key. पहले जमाने में सीधा बोला जाता था ऑफिस में ही आना है, हमारे घर में कोई नौकरी नहीं करता, ऐसा आपके दादाजी बोलेंगे आपको. बिल्कुल. फिर आप तो बोलोगे नहीं मैं तो करने वाला हूँ, फिर वो बोलेंगे आजकल कोई अपनी सुनता नहीं है. बट वो दादाजी में भी कुछ अक्ल थी, थोड़ा बहुत उस पर गौर भी करना चाहिए. टू बी प्राउड दैट आई एम गोइंग टू डू ऑन माई ओन इज लिटिल ह्यूमिलिटी के साथ भी रख सकते हो. सो आप getting attachment, getting involvement, getting engaged into what is going on over a period of time, you continue your computer science, you continue your whatever it is, but being in touch will keep you realize grounded about the reality. The problem is this: people go for BBA. It means not this business. Then they don't get any job. They thought that BBA will get criticism. So now what? MBA. So after MBA what? Of course placement तो लेना ही है. All this process, they come on a world tour. And in world tour, because anyway they are naive, they go to London, they see only London Eye. They don't realize London में भी गटर होती है. Okay? Greatest of the business, also there are challenges. But they have never seen challenge. And after this whole thing, when they come to business, they see challenge only. Life is always a balance of opportunity and challenge. And challenges, yeah. And you need to learn to internalize both. Don't get super excited with challenge. I mean opportunity. And don't get nervous with failure. Like failures. So I will tell you, real factors for success in business is what? Is not your startup idea. Startup idea anybody can get. Is not your startup funding. आप 5 यूनिकॉर्न की बात करते हो, 5 लाख बिजनेस स्टार्टअप होते हैं, उसकी बात नहीं की जाती. These are hype. Real thing is what? Real thing is sticking your neck out. Real thing is guts. Real thing is कहाँ से करेंगे पता नहीं है, फिर भी लोगों को खड़ा करते हैं. मुझे 100 करोड़ बनाना है, कैसे मुझे नहीं पता. And that is how they started working with people, with humility, putting things together, and failing, getting up again. This is the formation of a businessman. तो अभी तो हमने बिजनेसमैन का बात करना ही छोड़ दिया ना. नाउ एवरी सेकंड जनरेशन इज अशेम्ड कॉलिंग बिजनेस, सो दे कॉल देमसेल्फ एंटरप्रेन्योर. जबकि बेसिक्स ऑफ बिजनेस वेयर ऑलवेज सेम, आर सेम, एंड इन फ्यूचर विल आल्सो रिमेन सेम. या ठीक है. If you happen to be at the right place at the right time, you were on the wave and the wave went up, you start believing that you took the business up. Then it's another matter. But general family business will say, humble raho, keep your feet on the ground, and head in the cloud. And this is the secret of success of family businesses. सर आपने मतलब आई थिंक 3 जनरेशन्स के साथ काम किया है, करेक्ट? एक बेसिक कॉमन चीज़ आपने जो देखी हो, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में थी, जो उनको सक्सेसफुल बनाने में और आज जो लेवल पे है, जो ग्रोथ में बहुत हेल्प किया है, जो आज की जनरेशन में आपको नहीं दिखती हो या कम है?
सी आज के जनरेशन को मैं देख रहा हूँ एट द एज ऑफ 20, राइट? उनको हम लोग देख रहे हैं एट द एज ऑफ देयर 45 एंड उनकी 75. तो ऐसा नहीं है कि कम है, उनके अंदर क्या था, फायर इन द बेली टू मेक इट वेरी बिग. आज के जनरेशन में भी है, लेकिन गाइडेंस नहीं है. दे हैड वेरी क्लियर, वी मस्ट लर्न. बट गाइडेंस तो पहले भी अब आज तो फिर भी गाइडेंस है, मेंटोर्स है, सोशल मीडिया है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ से. पहले तो कुछ भी नहीं था. पॉइंट इज सोशल मीडिया और वो सब क्या बताता है, रिसाइकल स्टोरीज. जबकि ह्यूमिलिटी क्या बोलती है, मेरे प्यून को मेरे से कुछ चीज में ज्यादा मालूम है. हर्ष गोयनका वुड से दैट इन आवर फैमिली HR was taught right from the childhood. ड्राइवर का नाम दीपक है. एज ए चाइल्ड आई कॉल दीपक, गाड़ी निकाल, एक झापट पड़ती है, दीपक अंकल बोल. Respecting other people was inculcated from there. And the same thing the young people can do. It's not that they don't have a fire in the belly. I would say misguided, because instead of looking here, they are looking there. Instead of looking at actually how people are building business, they are listening to the stories of imaginary thing done to grow the business. Take example. Yeah. Every young person will know Steve Jobs. Of course. Okay. Will they know John Scully? No. Now, when John Scully entered, from where did he took Macintosh to what? Nobody talks. Because हमने तो story बतानी है ना. Steve Jobs was supported or funded by Bill Gates when he was desperate in the need of money. Right. If he was that great, why did he need money? Steve Jobs was not willing to introduce a phone. His team somehow convinced him to pick up. The point is what? It's not that Steve Jobs is great or not. Every person is great. Only thing is, for creating story, we have to make spicy. So we take only something and then we go to the extent, another extreme. I want to say something, I will say, and then put Steve Jobs. And so young people, instead of looking at people who have actually made money, are looking at people who are telling stories about how to make money. Because any family business, his father has made money. आपकी तरह से वो शायद इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, आपकी तरह से नहीं बोलते होंगे, लेकिन अगर आप में थोड़ी भी अक्ल है ना, तो उन्होंने तो बिजनेस बनाया हुआ है ना. Right. तो पहले वन थिंग वाज कनेक्शन. प्रीवियस जनरेशन में क्या होता था, दे हैड अ रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली मेंबर्स. वे बाबूजी ने बोला है मतलब कर देने का. अभी तो हम खुद डिसीजन लेने लगे. मेरा पैशन नहीं है. पहले देयर वाज अ एक्नॉलेजमेंट that we are part of the family and it was our responsibility to the family to take our family name forward. Right. Today we have disowned the responsibility and started believing that I am a genius. You are genius actually, but real geniuses have humility. So if we respect both, then what happens? Previous generation wisdom has to be transmitted. External environment, new knowledge has to be inculcated, and then sit on the shoulder of the previous generation to take the business forward. Right. This is the story how family businesses have grown and continue to grow. There can be commentators talking about all these problems. They keep talking about there are sessions that they don't do succession planning and all these things. But still, you keep talking about businesses continue to grow. Right. सर फैमिली बिजनेस को एक टैग मिला हुआ है, लाला कंपनी. डू यू थिंक ये परसेप्शन गलत है और इस परसेप्शन या इस इमेज को चेंज करना ज़रूरी है? फैमिली बिजनेस पीपल डोंट बॉदर अबाउट कौन सा क्या टाइटल देते हैं. ये तो है ना, बाकी लोग जो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं कमेंट मारते रहते हैं. लाला, यस ऑफ कोर्स लाला, बिकॉज ही इज टेकिंग हिज नेक आउट. पर्सनल गारंटी लेता है, अपने घर गिरवे पे रखता है. क्या मैनेजर को आके सब परमिशन दे देगा? आप लगाओ ना. जो बोलता है कि वो फैमिली बिजनेस वाला लाला है, आप अपनी पर्सनल गारंटी पे दो और मैनेजर को डेलीगेट कर दो. द पॉइंट इज, ये जो सब डायलॉग मारने वाले हैं ना, उन्होंने खुद तो कभी बिजनेस किया नहीं है, लेकिन दूसरे बिजनेस को स्टडी भी नहीं किया है. एक भी फैमिली बिजनेस वाला बोलता है क्या कि हम लोग लाला है? ये बाहर वाले बोलते हैं. तो बोलने दो ना यार, हमको कोई फिक्र नहीं. वी आर मोर बोदर्ड अबाउट इंक्रीजिंग अवर बिजनेस. द क्वेश्चन इज, फैमिली बिजनेस एज अ वे ऑफ मैनेजमेंट, instead of learning with so much less resources, how are they managing well? Is there a management science? Instead of that, हम लोग अमेरिका में पढ़ के आते हैं, वहाँ का केस स्टडी लेके आते हैं. वो केस स्टडी ये लोग करते नहीं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं लाला कंपनी. भाई मैनेजर को मैं अपॉइंट करूँ,
उसके पहले वो काम वायबल है कि नहीं वो तो मैं देखूंगा। Yeah, correct. तो इंजीनियरिंग में प्रिंसिपल है, कोई भी नया चीज स्टार्ट करनी हो ना तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। Right. एक बार हो गई ना तो मैनेजर चलाते हैं। Hmm. फैमिली बिजनेस वी नो वेरी वेल एनीथिंग विच इज वेरी न्यू Hmm. ओनर इज इन्वॉल्व, अदर देन दैट पीपल रन द शो। वापस ही कमेंट वाले बोलेंगे ये सब है ना अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। जरा एक भी फैमिली बिजनेस वाले को देखो, ऑफिस कौन खोलता है? ओनर खोलता है क्या? Hmm. 5 लाख बाहर से आता है, गिनेगा कौन? ओनर गिनता है क्या? Hmm. लॉकर में कौन रखेगा? ओनर रखता है क्या? फैक्ट्री रोज ओनर मशीन चलाता है क्या? फैमिली बिजनेस पीपल आर द फर्स्ट वन टू डेलीगेट, and their delegation is very very different than so called corporate delegation। कॉर्पोरेट को है ना डिफाइन करना पड़ता है, KRA होगा क्या होगा, KPI क्या होगा, परफॉर्मेंस में। फैमिली बिजनेस में कुछ नहीं, वी सॉ हिम परफॉर्मिंग, वी गिव हिम टेस्ट। एंड एक्चुअली if at all anybody studies family business from the point of view of how good they are, then they'll find out hundreds of things to learn from that family business। बट बात करने में मजा आती है ना, और बात तो इन्हीं के ऊपर करेंगे, लीवर के ऊपर तो कोई बात नहीं करेगा। LNT वाले हाथ छोड़ते नहीं, वो बात नहीं करेगा। आज IIM नायक एट व्हाट एज ही इज स्टिल इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर, कोई बात नहीं करेगा। Actually, corporate world थोड़ा glamorous लगता है और ग्लैमरस नहीं है, ये जो कमेंट मारने वाले लोग हैं ना वो उधर नहीं मार सकते। इनको पीटो ना, ये तो सामने कुछ बोलने वाले नहीं है ना, तो पिटाई करते जाओ। स्टारबक्स आदमी जो हॉवर्ड करके नाम है, वॉज द फर्स्ट वन, रिटायर हुआ, कंपनी हिलने लगी, वापस आया, ठीक है, वापस रिटायर हुआ, कंपनी हिलने लगी, वापस आया। अरे इसका केस स्टडी भी तो बताओ। लाला की क्यों बात करते रहते हो? क्योंकि मजा आता है, और वो तो कुछ बोलने वाले नहीं बेचारे। बट आइडियली एवरी फैमिली बिजनेस इंक्लूडिंग अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप हैज अ सुपर्ब मैनेजमेंट इनसाइट। Go into it, make theories. I think corporates will benefit by learning from that। Take example, there is a vegetable vendor। मैंने पूछा आप धंधे कैसे करते हो? बोलते हैं आप भी धंधे में आ जाओगे क्या? ऐसे नहीं, हम तो प्रोफेसर है, सबसे सीखते हैं। बोलते हैं हमारे एरिया में ना वर्किंग वेमेन है, 7 बजे मेरा वेजिटेबल तैयार चाहिए। मतलब मेरा टेम्पो इधर आ जाना चाहिए 6 बजे, मार्केट से आने में 1 घंटा लगता है, मतलब वहाँ से 5 बजे निकलना चाहिए। इट मीन्स मेरी शॉपिंग 4:30 बजे खत्म करके टेम्पो में लोड हो जानी चाहिए। इट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई होम एट 2 o'clock। मॉडर्न लैंग्वेज वाले बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इतना बड़ा सब्जेक्ट, एंड वन कॉलेज इन US इज टू गुड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ हर जगह पे सप्लाई चेन होती। दूसरा मैंने उसको पूछा, वो बोलता है यहाँ पे ये एरिया में ना 100 किलो 100 रुपये से ज़्यादा महंगी होती है ना तो सब्जी नहीं बिकती है, और ये एरिया में करेला नहीं चलता है। इसको बोलते हैं कस्टमर इनसाइट। उसके पूरे मार्केटिंग का कोर्स हो जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट दे इज डूइंग 7 to 9 he disposes of 80% of his vegetable, and remaining he sells to hawkers, and at 9 o'clock he is free। अभी अगर आप मेरे को कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स बताओ, मैं एक वेजिटेबल वेंडर से आपको उसका लर्निंग निकालूंगा। द पॉइंट इज every so-called educated person wants to keep on hitting only family business। अरे थोड़ा उससे भी सीखो तो सही। एंड ऑल said and done, आप ही बोलते हो कि 80% इज क्रिएटेड बाय देम, तो कुछ तो होगा। बिल्कुल। तो एक सेमिनार मुझे बताओ होता है स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली बिजनेस का, एक सेमिनार बताओ। Whereas hundreds of seminar, hundreds of speaker will talk about problems of family business, yeah। and all are imaginary problems। Succession planning, real problem is not succession at all, real problem is induction। Let's talk about succession planning। Okay, good। So बड़े कॉर्पोरेट्स में तो बात होती है, बड़ी फैमिली बिजनेसेस में सक्सेशन प्लानिंग की बात होती है, बट इस वर्ड को लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस वर्ड सक्सेशन प्लानिंग। लेट्स अंडरस्टैंड, कौन से बड़े फैमिली में सक्सेशन की बात होती थी? धीरू भाई ने बोला था क्या? ये तो मॉडर्न प्रोफेसर को, अभी मुकेश भाई को तो कंसल्ट करना पड़ेगा ना, जो मॉडर्न फैशनेबल है वर्ड वो बोलना पड़ेगा। बट देर इज नो सक्सेशन प्लानिंग लाइक दिस। रियल इश्यू इज देर इज नो सक्सेशन प्लानिंग एनीवेयर। कैन अमिताभ डू सक्सेशन प्लानिंग टू अभिषेक? Amitabh is Amitabh, Abhishek is Abhishek। The next generation will be next generation। They will have different opportunities, they will have different strength। What is really required is induction।
आज एक 25 साल का youngster is joining the business. Obviously, his father is 45 to 50. 20 years how they are going to work together is what is to be required. Not about when are you going to hand over the keys. और जिसने 20 years काम किया ना वो तो ऑटोमेटिक सक्सेशन होता है, उसमें कौन सी प्लानिंग करनी पड़ती है? नहीं, जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है या जहाँ पे सिबलिंग्स ज़्यादा होते हैं वैसे फैमिली बिजनेसेस में पहले नहीं होते थे क्या? The whole point is more sibling, we have greater opportunities. We can start into this business also, this business also. We have different competences. We can complement with each other. लेकिन ये बार-बार बोला जाता है एक्चुअली ना, थिंग्स आर नॉट क्लियर सर, थिंग्स आर नॉट क्लियर कि मालूम नहीं है कि हमको करना क्या है, तो उसकी वजह से क्लैश होते हैं। कहीं पे भी इसकी वजह से क्लैश नहीं होते हैं। जिसके वहाँ पे आउटसाइड प्रोग्रामिंग है ना कि क्लैश होता है, तो वहाँ पे क्लैश होते हैं। जहाँ आउटसाइड प्रोग्रामिंग नहीं है, आई विल टेल यू, आई हैव ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ओके, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम टायर 2 टायर 3 सिटी। उनको ये प्रोग्रामिंग नहीं पहुंची अभी तक, ठीक है, वो लोग बात करते हैं आपस में, लेकिन दिल्ली बॉम्बे में प्रोग्रामिंग पहुंच गई है, तो उनको लगता है क्लैश हो रहा है। सो नॉलेज एक चीज समझ लो, नन ऑफ अस वर बॉर्न विद द नॉलेज। पीके मूवी ने एक टेक्नोलॉजी सिखाई ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की। वो एलियन था ना, मालूम नहीं था, हाथ पकड़ो आंख बंद करो, पकड़ के रखो, नॉलेज विल ट्रांसफर। द नेक्स्ट जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन का हाथ पकड़ना चाहिए, आंख बंद करके विदाउट एनी कंडीशन लेना चाहिए, दैट्स इट। अभी ले लिया, बाद में यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द शेडो, देन व्हाट यू विल टॉक विल बी सेंसिबल, एंड देन द टू जनरेशन टॉक्स। प्रीवियस जनरेशन क्या बोलता है, अभी तुम्हारा टाइम है, तुम भागो, लेकिन तुम जो करते हो ना वहां पे कहाँ गिरोगे वो बताते हैं। So far in Indian culture, generation to generation, it's not just wealth got transferred, the wisdom got transferred. And somehow with this whole external orientation, we put the brake, but it is in big cities. In tier 2, tier 3, still there is a great respect for the father, there is a great respect for grandfather, and in the process there is a next thing happens. You ask me about, you know about so many businesses, so many students that I have. Whenever there is we have mentors meet, we got senior generation, we got younger generation. I take senior generation in one room. I said, what do you want in life? He says, हमने तो सब कुछ कर लिया, अभी ये जनरेशन है, बस वो आगे बढ़े, वो हम देखना चाहते हैं। I take younger generation in other room. What do you want in life? I have seen my father struggling. All that I want him to sit back and relax. Relax, right. ये रियल फैमिलीज है। करेक्ट, राइट। अभी मॉडर्न फैमिली में जो बाहर ए लोगों ने एडवाइस कर दिया, वो बोलते हैं यंगर जनरेशन, माय फादर तो पावर छोड़ते ही नहीं। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल क्यों बोलते छोड़े? जाओ ना जनरल इलेक्ट्रिक में काम करो और बोलो कि सीईओ शुड लीव पावर। अरे इट इज हिज बिजनेस। ऑन द अदर एंड, रियली स्पीकिंग, ही डजंट वांट टू टेक एनीथिंग, ही वांट्स यू टू बी रेडी, टू बी एबल टू be ready, जस्ट right. द पावर, to deserve that power. so unconditional acceptance of family relations are there, then there is no problem only. ठीक है ना, फादर चिल्लाते हैं, ओके, इट इज हिज नेचर, Correct. तो क्या हुआ? सो द पॉइंट इज, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल misleading inputs, many times young people become impatient and they think that they want to drive the things. Of course you are going to drive, but suppose you are 7 down in the team, आप बोलते हो मैं पैविलियन में आ गया हूँ, मैंने पैड पहन दिया, तो मेरे को अभी का अभी पीछ दे दो। अरे आपका टर्न आएगा तो आपको जाना ही है। नहीं तो अब अभी तक मैं क्या करूँ? अरे यू आर सपोज टू ऑब्जर्व हाउ इज द फील्डिंग, हाउ इज द बॉलिंग, विच काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। ये किसी ने नहीं सिखाया। मैं जब भी पैविलियन में आ गया ना, मेरे को अभी जगह पीछ दे दो। ऐसा बहुत बार होता भी है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह हुआ एंड आप बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप डायरेक्ट अपर लेवल पे आप आकर सीधा टेबल पे आप अपनी डेस्क पे आके बैठते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, बट आपको सीट मिल गई है बिकॉज ऑफ योर फैमिली नेम, राइट? कितना सही है ऐसा, ये चीज होना चाहिए? 100% ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आई विल टेल यू, ये जो एडवाइजर्स लोगों ने ना सब बोलना चालू कर दिया। द पॉइंट इज, यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू डू पेटी पैकिंग, यू हैव टू लर्न अबाउट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू लर्न अबाउट द चैलेंजेस। ये पेटी पैक करने वाले से काम कैसे कराना, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सो मे बी एक दिन आपने वहाँ देख लिया, एक दिन आपने वहाँ पे देख लिया,
more or less getting idea कंपनी में क्या हो रहा है, तो अब ठीक है. But you have to learn about how to manage the business and how to do the things daily. So जब फादर की कैबिन में आप बाजू में बैठते हो, तो you are looking at how father manages, and that is your job. अभी ये भी नेपोटिज्म बोलना अब कितना इजी है, तो बोल दिया, सीधे पैराशूट होके आ जाते, हमने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया. Right. And it is the grooming there of managing the business, owning the business, taking the decision, getting work done from people. This is what is to be done. So there's nothing wrong. Absolutely, everything is going fine. And still, with all the external influence, for example, you are what age? 27. 27. Obviously, you have also attended many seminar, आप ईओ में गए होंगे और सब जगह पे, और अभी तो ये रील वगैरह अभी चलती है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट बोले हैं. तो आपको भी ये सब इन्फ्लुएंस तो आई, अभी आजकल सेमिनार में जाने की जरूरत ही नहीं है ना सर, आ जाती है ना, सीखती है. आ जाती है. लेकिन the day you actually get involved in the business, Yeah. all this is aside, हाँ, of and course, you will ask your father, practical knowledge is totally different. हाँ, you आप will जैसे- ask your father where you don't know, Correct. right? And you will start realizing the wisdom of the father. You know, there is Vivek Bhargav is one of our student, Okay. a good name in IT industry. He makes one dialogue. I learned sound travels slowly. Okay, but particularly father's advice, travel too slow. तो उन्होंने बोला था ना, 5 साल के बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या बोला था. And that happens, and that is why Indian family businesses are absolutely doing well. The next generation थोड़ा बहुत इधर उधर करके बाद में आ ही जाते हैं. Post 30, everyone, if they are not attending those seminars, are fully dedicated to business. They do interact in the family, and they're growing. Because अब वो उनके शूज में आ चुके हैं. करेक्ट, वो उनकी सिचुएशन में आ गए. बिकॉज पहले वो बिजनेस के अंदर नहीं थे, इसलिए जो ऊपर ऊपर से देखकर उसके बारे में बात करते थे. बट व्हेन यू practically, when you are into the business, when you are handling all the thing, when you have responsibility at your head, then it's a different They are thing. going to do it. Right. And they are doing well. Right. Every generation is doing well. Correct. And family business are growing. If you want to say economy is going at what speed and family business are going at what speed, family business will be growing faster than the Faster than the economy. Right. आप खाली सर्वे करो, 2000 में जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर था, वो कितने पीरियड में 10 हुआ और कितने में 100 हुआ. यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल. सर, आज भी फैमिली बिजनेसेस में विमेन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. राइट. कम है. व्हाई इट इज लाइक दिस? We have to understand the social context. Most of the business family will not encourage the daughters to get involved in business. The reason is what? अगर daughter business में आई, वैसे भी daughters है ना young age में मैरिज नहीं करूँगी ऐसा डायलॉग मारती है, और बिजनेस में आई तो ये डायलॉग मारना और जस्टिफाई हो जाएगा. सो शी विल नॉट वांट टू गेट मैरिड. ये कंसर्न है पेरेंट्स की, एंड इज अ जेन्युइन कंसर्न. सो सिक्योरिटी इज नॉट इनसिक्योरिटी, फियर. nothing. Okay. The point is that the girl gets married, and post marriage they has to get into another environment. If she develops over attachment with this business, then it has a practical problems. So this is the reason why parents discourage the daughters from coming to business. This is the reason. Now, actually this happens because of little misunderstanding. Getting into the business is not for getting into the business. I repeat my word. Huh? Getting into the business is not for getting into the business. Getting into the business is for learning realities of how business work. So if you involve your daughter into family business, is not for her to be eventually fully involved in this business. Is for her to learn realities of business. Of business. Of course, all girls are going to get married. They are going to get married and they are going to be in in-laws place. And if they will keep one leg there and one leg in parents' business, there are going to be practical problems. But if you groom daughters in family business, you make them strong. So eventually, wherever they are, they also dream about business. They also have a bigger ambition. They also do the things. This particular phase is what is because of the parents' concern missed out. So you think this is the only reason
why girls are not involved into business? This is the main reason. Main reason, okay. Then let's understand. There is a role of in home making. Homemaking, yeah. There is a role of mothering. There are certain roles which only women can do. And theoretically, anybody can talk anything. But I have interacted with thousands of women. Right. They have their joy into caring for the family. Right? Now, the second mistake we do is that caring for the family seems to be opposite of being involved in business. Whereas it's not necessary. For a woman to get involved in the business does not mean she has to go to office every day. Does not mean that she has to be there 9 to 5. Right. Does not mean that she has to take operational responsibility. It means thinking about business, getting involved into decision Decision about the making, yeah. business, contribute another perspective to doing it, and identifying herself with the business. Yeah, it is not necessary that you have to be at the office from 9 Is to not 5. necessary at all. Once upon a time, when I grew up 50 years ago, when I was involved in the business, you have to be in office. Today I'm traveling, and wherever my laptop is, there is my office. Yeah. When you have to be in office, there are office time. When you are with your laptop, you can reply to an email at 2 o'clock at night. Right. So work has become gender neutral. Women are equally capable, क्योंकि वो भी तो business family में बड़ी हुई है, Correct. तो उनके blood में भी तो business आया है. The whole point is today it is reduced so much that one of my students says, we don't mind wife doing something of her own. Now secret words behind. साल का 20-25 लाख लॉस का बजट कर लेते हैं. Why? This woman can do business as good as you. Right. Why should she not have an ambition of creating wealth of 100 crore? Whole point is the whole society is doing that. सर क्यों है ये थॉट प्रोसेस क्यों है? बिकॉज ये बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है ये ओल्ड टाइम की और है, टियर 2 और टियर 3 में तो बहुत ज्यादा है. बहुत ज़्यादा है. हाँ. But there also there are two aspects, Even in tier 1, it is either in the other extreme. I want my own space. Is that kind of thing. But is not that grasping about business, ambition about business, making it big. That part, our society, social situation, context, everything has delayed it. But today also, how many seminars you talk about how to promote the role of women into businesses? Not much. It's not that only elders were like this. Even youngsters are not talking about it. Yeah. Whenever you see hundreds of seminars about business, it only man tends to go. करेक्ट. What we miss out is that every married woman in business family is ultimately going to mother tomorrow's CEO. And in fact, they do have tremendous quality of resilience, of facing difficulty, facing big challenges. And that is what is grooming the next generation. So mothers have a role. Subtle role was always there. Gross role was not there. Point is, they can play subtle as well as gross role. And that is what is a mission which we have about grooming the daughters in family business, accepting social realities of marriage and in-laws and what's called women exogamy. They go into Women? another exogamy. They Exogamy. go to another family, which is reality. So within that, how can we inculcate business spirit is a challenge for the society. We don't talk much about it. Yeah. Okay. You are very optimistic about family business, and even I am very optimistic about because I come from a family business. But what are the few challenges that you see in family businesses? In the terms of, saying the times have changed. No, we no, are- not with, no, I'm not with giving you the this. Yeah, challenge huh. only. In the say times have changed, we are missing out on what never changes. What we are missing out is, in any case, family business meant transmission of wisdom from one generation to another, To another generation. generation. It means generosity in the previous generation and humility in the next generation. Now, in terms of all the so-called modern education, so-called reading, so-called seminar, we are missing out on that humility to receive from the previous generation. And everyone wants to start from zero. जस्ट मेरे पास में आइडिया, ऐसे धंधा नहीं होता है. धंधा आइडिया से नहीं होता है, धंधा अपॉर्चुनिटी से होता है. तुम्हारे पास में आइडिया है ना, ठीक है, आई विल ट्राई टू सी इफ इट वर्क्स, आई विल बेट ऑन यू.
Why I have to have all the ideas? Correct. The point is, I'll tell you, we started family business course. I was involved for 25 years. After me, 10 different colleges I have seen coming with family business. But everyone wants to add a family business and entrepreneurship. Nobody sticks their neck out. Yeah. Family business only. Only family business, yeah. Here is the point. All the second generation want to introduce themselves not as a family business. They want to introduce themselves as entrepreneur. So the whole point is today bashing family business is at peak. So much that family business people themselves have started doubting their ability. But I know them. दुनिया कुछ भी बोले वो अपना काम करते रहते हैं. Correct. And every year after year they are growing. हाँ. They are the best to adapt to the technology. Right. They are the most efficient in resource utilization. एवरेज आदमी से अबव एवरेज काम करने की जो अगर एचआर की पॉलिसी है ना तो दे आर डूइंग द बेस्ट. डेलीगेटिंग 2 करोड़ की मशीन है ना एक वर्कर के ऊपर छोड़ देते हैं. दे आर द बेस्ट. बिल्कुल. So let the world keep talking. Ultimately, India will grow because family Because of businesses are family there, business, yeah. not because of any government. In spite of any government, family business will grow, and they'll continue to help the whole economy. इकोनॉमी, राइट. हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं, सारा रेवेन्यू वगैरह ब्रेक इवन सब दिमाग लगा लेते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल में इतने टाइम में हम ब्रेक इवन आ जाएगा, सब गुड होप्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं, राइट. बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सपोज ये टेबल है या ग्लास है, इसको 100 लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट 5 लोग बहुत बड़े स्केल पे चले जाएंगे, पैन इंडिया लेवल पे चले जाते हैं, बट 95 जो है वो ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है, वो एक मिड लेवल पे एक सिटी में ही रहकर रह जाता है, राइट. वो एक डिफरेंट थ्योरी क्या है जो वो 5 लोग कर रहे हैं कि वो 5 इतना बड़ा क्यों बन पा रहे हैं. Let's see, there are multiple things. Again, आज के अब टाइम हम में तीन चीजों के बारे में बात करते हैं. आज के टाइम में ना अपनी फैशन है कि हर चीज को किसी न किसी को सिंप्लीफाई कर देना था. जो ऊपर गए ना देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. लेट्स टेक नारायण मूर्ति. ठीक है, हम सब चीज एट्रीब्यूट कर देंगे नारायण मूर्ति वाज लाइक दिस. बट द फैक्ट इज ही स्टार्टेड मच अर्लियर. करेक्ट. Why for a decade he didn't grow? He grew because he was at the right place at the right Right. Of course, there were many factors. So the point is that all those who go up, there are number of factors, and there is no one-line answer कि वो vision था तो चला गया, वो ये करता था तो चला गया. There were number of factors, and the same number of factors, some other people are not in that position. मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. 100 things are involved. 100. And the point trying to simplify that there is only one reason why people grow is little inadequate. Yeah. So life is complex. So many things are there. Nokia went down because when mobile, they had a competitive advantage. New technology came. So Google making Android free is one of the things that will affect Nokia. Okay. 2002 recession, .com bust. .com bust. Resulted into very low cost of bandwidth, because of which BPO grew, Correct. because of which Wi-Fi became available, because of which everybody had Wi-Fi in that thing, because of which Uber succeeded. If there were only 10% people having mobile, then Uber would not succeed. So it is not that the vision of Uber, a number of factors coming factors together, involved, yeah. that is there. So a wisdom is in ability to understand complexity rather than simplifying and making with one line statement. Life is not simple. Correct. So So you should read Psychology of Money. I've It already will read explain yeah. you why Bill Gates is Bill Gates. Not because he's only genius. Of course he is. But number of factors play. 3 books you want to recommend to our viewers. For My- every young entrepreneur, for every businessman, they should read these 3 books. I will tell one book which I have been teaching for 25 years. Managing for Results. Managing for Results. Peter Drucker wrote this book in 1964. Outdated for many people it may sound. Extremely difficult to read. Okay. Why? It's difficult because it's straight away talking the direct things. Okay. But if with patience, if you understand, that is the best book that could build your business. Okay. Okay. Then of course small books like Psychology of Money. Okay. Then there is another book was what? Fooled by Randomness.
Okay. Okay, these are some of the things which will explain you. शेयर बाजार में कोई जीनियस नहीं होता. ओके, सो मेनी थिंग्स हैपन रैंडमली. किसी की लॉटरी लग गई तो वो जीनियस नहीं हो गया, और उसकी कोई फॉर्मूला चलती नहीं है. Correct. So learning that there are complex things, you will succeed also, you will fail also. Right. Have the guts to take decisions. This is the secret. कोई भी entrepreneur, कोई भी businessman है, 3 चीज सबसे main important है जितना मुझे समझ में आई. First is risk capacity. No, No? good business person does not take risk. Okay. They do what appears risky, but remove the risk out of it. बंजी जंपिंग है ना, रिस्की है. देखने वाले को रिस्की लगता है, लेकिन उधर से जंप मारने के पहले कोई रिस्क नहीं है. मल्टीपल रोप्स, वेल टेस्टेड मैकेनिज्म. आपके पहले पत्थर डाल को भी देख लिया उन्होंने, मसल भी नहीं खींचेगा, हड्डी भी नहीं टूटेगी. ये सब प्रूव होने के बाद नहीं बंजी जंपिंग होता है. दुनिया को रिस्की लगता है, हम रिस्क निकाल दें. एक चीज की फैक्ट्री डालनी है, मैं सीधी फैक्ट्री नहीं डालूंगा, पहले उसमें ट्रेडिंग चालू करूंगा, कस्टमर डेवलप करूंगा, धंधा सीख लूंगा. एक बार एक लेवल पे पहुंचूंगा ना, बाद में फैक्ट्री डालूंगा. तो बिजनेस वालों ने जो भी किया ना, दुनिया को रिस्की लगता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते. तो आई थिंक सारा जितनी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है ना, सबका एक ही सोल्यूशन है, कम्युनिकेशन. True. करेक्ट. And before communication comes respect, रिस्पेक्ट. mutual respect. म्यूचुअल रिस्पेक्ट. सो फर्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, ताकि उस कम्युनिकेशन गैप का कोई दूसरा आउटसाइडर फायदा नहीं उठा ले. True, very Right. true, very true. सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई भी एक रूल देना हो यंग एंटरप्रेन्योर को, कि चाहे वो माइंडसेट का हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन लेवल पे हो, बट इट शुड बी देयर, तो वो क्या होगा? Look, be grateful to your family for what you are, and have a dream to take your family business multiple time forward. And it could become different. It's not that we were trading in coal. It does not mean I will take 10 times in coal. But family का नाम था ना business का. You will take the name 100 times forward. That is your passion, and not your yacht or your plane.